Good evening, all. I hope you all are doing well. So, I'm back with another live session, and this time I'm going to cover important environment news. तो मैं इस बार के सेशन में जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट की न्यूज़ हैं और पर्टिकुलरली जो अभी लास्ट 2 वीक्स में हिंदू अखबार में द हिंदू न्यूज़पेपर में रिपोर्टेड है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा. What I've done is that I have filtered out important articles which are linked with pollution, climate change, biodiversity part, and there are some other aspect also there. As you know that environment itself is not a completely a subject, is a subject which is linked with every part of human life. Whether you talk about economy, geography, society, culture, you take any aspect, policy, गवर्नेंस, इन्वायरमेंट एवरी कम्स एवरीवेयर. तो मैं आज उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी मैं टॉपिक्स कवर करूँगा ये सब आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. और मैं ये हमेशा कहता रहा हूँ कि जो भी टॉपिक मैं अपने यूट्यूब वीडियो में कर रहा हूँ मैं ये केवल किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं, इज़ नॉट ओनली फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम और एनी स्टेट लेवल एग्ज़ाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बट आई एम ऑल्सो फॉर जनरल पब्लिक. आई एम शेयरिंग द इंफॉर्मेशन देयर. तो इसलिए ये इस मामले में बहुत इम्पोर्टेंट है. और यू ऑल हैव जॉइंड दिस प्रोग्राम, सो आई एम रियली वेरी ग्लैड टू सी यू ऑल, एंड आई विल बी इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. So I'll not take much time. I'll not go too lengthy also. We'll go to the important news and I'll discuss various dimensions that is required from the examination point of view. और अगर आप कोई स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आपको जनरल एस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव में पता होना चाहिए, वो बात को मैं आज कवर करूँगा मैं. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल हैं. यू ऑल आर डूइंग रियली वेल. Right, I'm going to start with my session here. Let me see how many people have joined right now. Okay, I can see few of the people right now in the chat box. So good evening to Tanveer, then Ankit, right? Let us now begin with the topic one by one. You all are free to ask me questions. Whatever questions you comes to your mind, please do ask me, right? आपको कोई भी सवाल पूछना हो, I am there to guide you, give you reply. So please feel free to ask whatever comes to your mind there. Now let's start with the topic here. What I would like to start here, हिंदू अखबार में कई बार स्पीसीज के बारे में न्यूज़ में होता है, राइट? जैसे कि अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आया हुआ है, वो है फाउना डेटाबेस. इंडिया एड्स 664 एनिमल स्पीसीज टू इट्स फाउना डेटाबेस, 339 टैक्सा टू इट्स फ्लोरा. कहने का मतलब है बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ 664 एनिमल स्पीसीज और 339 प्लांट स्पीसीज को जो डेटाबेस है उसमें ऐड किया गया. इस आर्टिकल में कुछ ऐसी नई चीज़ भी बताई गई है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वेन एवर यू आर टेकिंग एनी सच काइंड ऑफ न्यूज़ आर्टिकल, you must always look from what are the important points mentioned here which could be the part of any question in any competitive exam. That part. So I'll go into that. See, headline is just a window. Headline is just a window. You have to get to the main aspect of it where questions are asked in the exam. So let us start here. Data is given that these are the data where it has been added here, right? But now let's look at here. यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ का नाम आता है. आई विल जस्ट मेंशन दैट, यू ऑल नो दैट. इफ यू लुक एट इन्वाटर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इंडिया में अगर हम इन्वाटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दो ऐसे इन्वाटर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एनिमल स्टडीज़ एंड प्लांट स्टडीज़ के जो उसके डाइवर्सिटी है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ है. और बोथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. दे आर ऑटोनोमस बॉडीज़. For animal diversity in India, we have autonomous scientific organization called as ZSI, Zoological Survey of India, which was set up by Britishers, right? And Britishers also set another organization, which is Autonomous Scientific Organization for Study of Plant Diversity in India, that is called as Botanical Survey of India, BSI. ZSI and BSI, animal and plant fauna and flora studies, they are involved with kind of discovery, analysis, taxonomic
क्लासिफिकेशन एंड देन डॉक्यूमेंटेशन। दोनों बहुत पुरानी संस्था है, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है और आज भी ये काफ़ी एक्टिव है। एनिमल स्टडीज़ में एक और नाम आता है, देहरादून में स्थित है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। उसमें भी काफ़ी सारे एनिमल स्टडीज़ पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ के पर्सपेक्टिव किया जाता है। लेकिन जब हम नॉर्मल कोई भी एनिमल स्पीसीज़ की बात करते हैं तो वहाँ जेडेसाई का नाम आता है। जेडेसाई के वैज्ञानिकों के द्वारा सारे वो स्टडी की जाती है। तो ये जो आर्टिकल है, व्हाट यू फाइंड दिस आर्टिकल विच हैज़ अपीयर्ड इन द हिंदू पेपर, मैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स पे चर्चा करता हूँ। इसमें जो है, इफ यू कैन सी हियर, you have some kind of a photograph given here, like clockwise. When you see here, it's called macaca selai, ये ऐड किया गया है। what you see is a monkey, right? macaca selai. Then you will see this plant what you can see here, the calantha, that is name, botanical name has been given. Then you have a bird here, then you have another one here, you find here another, then all this name there. You have a bird, you have a bat. You can see this is the smallest bat. Then plant species, what you see in the photograph here. Now if you see here, what is main aspect given here? It is said here is that mammals, reptiles, birds, whatever have been found. अब इसमें दो important discovery के बारे में बात किया गया। I am zooming out the article. तो first you find here that is a species of bat, है ना। यहाँ पर एक स्पीसीज ऑफ बैट के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो एक नाम यहाँ पर अभी जो है, एंड यू नो बैट इज़ अ मैमल, बैट बिलोंग्स टू मैमल। तो द नेम हियर व्हाट यू फाइंड हियर, दैट इज गिवन हियर टू स्पीसीज ऑफ बैट्स, राइट। आई हैव अंडरलाइन दिस पार्ट हियर, टू स्पीसीज ऑफ बैट हैज बीन मेंशन्ड हियर, राइट। तो दिस विच हैज बीन नाउ फाउंड देयर, राइट। उसमें एक नाम दिया हुआ है जैसे लॉन्ग फिंगर्ड बैट, राइट, यू विल फाइंड हियर लॉन्ग फिंगर्ड बैट का नाम दिया हुआ है। दूसरा नाम दिया हुआ है एक बैम्बू ड्वेलिंग बैट के बारे में दिया हुआ है, और ये दोनों के दोनों मेघालय में पाया गया है। बोथ ऑफ दिस बैट स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेघालय एज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट देयर। एंड देयर इज अनदर मैमल जो कि वेस्टर्न सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश में पाया गया, दैट इज सेला, दैट इज नेम्ड आफ्टर सेला पास इन अरुणाचल प्रदेश, है ना। वहाँ पर एक मकाक है, व्हाट यू सी दिस मकाक, ये जो मकाक है, दिस हैज बीन फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, राइट, व्हाट यू सी द फोटोग्राफ हियर, राइट। ये यहाँ पर इसका डिस्कवरी है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो मंकी है, राइट, मकाका ल्यूकोजेनिस, वाइट चिक्ड मकाक है, राइट। ये मोडोक जगह का नाम है, साउथ ईस्टर्न तिब्बत। इसको पहली बार साइट किया गया था 2022 में वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, राइट, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में इसको 2022 में इसको देखा गया था। फिर इसमें यहाँ पर है फ्लाई कैचर, एक बर्ड है जो कि चाइना, कोरिया, मतलब वेस्टर्न जापान में पाया जाता है। यानी कि वो ये जो बर्ड जो है, व्हाट इज गिवन हियर, फिकाडुला जेंडोपिगिया, फ्लाई कैचर बर्ड है, इज़ अ माइग्रेटरी बर्ड, और ये नरकोंडम आइलैंड में भी लास्ट ईयर देखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्पीसीज़ के नाम हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये सारे नाम याद रखना है। मैं ये बताता हूँ कि कभी बार ऐसे जो आर्टिकल्स आते हैं, है ना, कई बार जो इस तरह के आर्टिकल होते हैं, और जहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है, यूपीएससी में क्या होता है, ऑलवेज ए सरप्राइज एंगल होता है। कई बार ऐसा न्यूज़ में आर्टिकल आ सकता है जो कि करंट अफेयर मटेरियल में नहीं कवर किया जाए, या जो भी कंपैरिजन आप करते हैं, और वहाँ पर जो यूपीएससी क्वेश्चन सेटर है सडनली वो क्वेश्चन पूछ दें। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, अरुणाचल प्रदेश जो है हिमालयन रेंज में आता है एंड इज अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यू ऑल नो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, विच इज नोन फॉर हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म मीन्स द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ओनली देयर, नोवेयर एल्स, राइट। प्लस उसके साथ और क्या है कि हम अगर देखते हैं बाकी नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, तो वो इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी आता है। तो वहाँ जो भी मैमल्स, रेप्टाइल्स, राइट, बर्ड्स, वट एवर स्पीसीज कम इन टू दैट, not only animal species but also the plant species, they are only found in those regions, and they add biodiversity of that area. That's why they are considered to be extremely rich in biodiversity and called as biodiversity hotspots.
India is a home of 4 biodiversity hotspots: Himalayan range, right? Then Indo-Burma, just now I mentioned, Western Ghats of India, and then Sundaland, which extend to Nicobar Islands, right? तो ऐसे जो आर्टिकल होता है पर्टिकुलरली आपको कहीं ना कहीं जो उसका मेन पॉइंट्स है वो लिख के रखना है. कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट इज प्रिपेयर टू आंसर इट, राइट. आई टेक योर क्वेरीज ऑल्सो देयर. तो ये जो डिस्कवरी है दैट इज व्हाट इज गिवन हियर एंड दैट इज बीन मेंशन बाय जेरेसाई पार्ट ऑफ इट, राइट. अब मैं कुछ बाकी एस्पेक्ट में भी आता हूँ. अभी हाल ही में उड़ीसा में, राइट, उड़ीसा में एक न्यूज़ आया हुआ है दैट इज इट इज रिपोर्टेड अबाउट डेथ ऑफ ह्यूमंस बाय एलिफेंट्स. What is this article here? That's called Odisha records 57 deaths in man jumbo encounter in 3 months. आप सभी को पता है कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, मानव और हाथी के बीच का संघर्ष एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है. इज अ बर्निंग इशू इन कंट्री वेयर एलिफेंट कॉरिडोर्स आर देयर एंड इट इज हैपनिंग फॉर मोर देन many years, right? Whether it's South India, Kerala, Tamil Nadu, and or even if you go to northeastern area India or even the eastern part of India like Odisha and all this. ये रिकॉर्ड आया हुआ है जहाँ पे एलिफेंट एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में. नाउ लुक एट हियर दिस आर्टिकल. व्हाट यू फाइंड हियर, दिस हिंदू पेपर हैज रिपोर्टेड दैट कि 57 लोगों को जंगली हाथियों ने कुचल के मार दिया. दिस व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इन द फ्रॉम मंथ ऑफ अप्रैल टू जून. वेरी सरप्राइजिंग. अप्रैल से जून के बीच में है ना 57 लोगों की जान जो है, लाइफ जो है, वो एलिफेंट्स के द्वारा गवा दिया गया. तो ये चीज़ है 50% हायर नंबर ऑफ डेथ्स है. और ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि 2-3 महीने के अंतराल में इतने ह्यूमन बींग्स को हाथियों ने मारा है. दिस वेरी सरप्राइजिंग थिंग हियर. एंड पर्टिकुलरली ये देखा गया कि वैसे वाइल्ड एलिफेंट विच those wild elephants which come to the food to banana plantation, right? जैक फ्रूट, कई बार जो होता है कटहल, जैक फ्रूट भी हाथियों को पसंद आता है. फिर ये जो केले वगैरह होते हैं, बनानास वगैरह होता है, they love to eat that. So the herd of wild elephant which come to such kind of areas, and in that case retaliation, when man try to ward off such herd of wild elephants, the wild elephant which become aggressive, they trample human to death. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है. इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको केरला के बारे में बताता हूँ. केरला में काफ़ी न्यूज़ में रहा है अरी कुंबन. अरी मतलब चावल होता है, कुंबन मतलब होता है चोर. मतलब मलयालम लैंग्वेज में केरला में उसको चावल चोर का नाम दिया गया है, अरी कुंबन. वैसे एक और हाथी है वाइल्ड एलिफेंट जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ चक्का कुंबन. चक्का इज अ मलयालम वर्ड फॉर जैक फ्रूट, कटहल. दैट एलिफेंट लव्स टू ईट जैक फ्रूट. अरी कुंबन को काफ़ी मेहनत करने के बाद दैट वाइल्ड एलिफेंट विच वेंडलाइज्ड राशन शॉप्स एंड ऑल द शॉप्स एंड एवरीथिंग, उसको बहुत मुश्किल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज टेकन बैक टू द फॉरेस्ट एंड देन इट हैज़ बीन नाउ साइटेड नियर टू द फॉरेस्ट ऑफ तमिलनाडु. तो कुछ ऐसे हाथी हैं जो न्यूज़ में रहता है और कुछ ऐसे भी है जो न्यूज़ में नहीं होता लेकिन ह्यूमन डेथ जो रीज़न है. एंड यू नो द रीज़न फॉर दैट. वन इज अ फूड फॉर दैट एलिफेंट्स कम टू द ह्यूमन हैबिटेशन. सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग, द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड वी आर गेटिंग नियर टू देयर हैबिटेट, टू द फॉरेस्ट एरिया, encroachment and all this. That also comes there. Third is that when we attack, we and then they retaliate back. There's another aspect of the conflict, right? So you see that there's such a problems are there, or even say that spraying of kind of chemical to ward off the elephant, even that has also caused the aggressive nature of elephants, right? तो ये जो आर्टिकल है जो कि एलिफेंट के कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है, राइट, ये बहुत काफ़ी न्यूज़ में हमेशा ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ने को मिलता है. तो ये मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जहाँ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट उसके बारे में हो. इसका सोल्यूशन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में. व्हाट आर द सोल्यूशंस हियर? वी नीड टू क्रिएट एलिफेंट रिजर्व विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट वी आर डूइंग दैट.
At the same time, the wildlife corridor, elephant corridors, trying to make people aware, and there should be continuous monitoring of the movement of elephants, warning to the people so that they are alert, they are aware that the group of elephants are coming there. Those are the some effective measures which can be taken there, right? Okay, I will take certain question here, then I'll go to the next topic here. Um, Tanvir is asking, he's a judiciary exam aspirant and interested in environment subject. That's really good. तनवीर, आपका स्वागत है. You are welcome to my YouTube channel. And whether you are preparing for judiciary exam, but environment and any kind of current aspect always become important for the examination. That will always help you out. All right. So you are welcome to my channel there. If you have any more doubt, you could ask there. I am looking at your chat box and I give reply to that. Right. Now Tanvir has also given certain reply. Relocation of human population. Yes, Tanvir, you are very right. Right. He has given a very correct information that sometimes those elephant and they are given to some kind of habitat like Arikompan, that elephant, and that was in Palakkad district of Kerala near Silent Valley. That was again relocation was done there. That's right there. So Ankit, good evening for joining this program there. Now let me go furthermore into some other news also there. There is again linked with the elephant. थोड़ा मैं अलग हट के बात करता हूँ. Let me now come to a very interesting news here. Non-Hindu name for captive elephants still taboo in Kerala. ये न्यूज़ आर्टिकल मुझे थोड़ा दिखा और मुझे लगा कि चलो ठीक है, इट्स नॉट completely from environment perspective, but I wanted to highlight something there. ये बड़ा मुझे ये आर्टिकल बहुत स्ट्राइकिंग लगा मुझे. What is here? Non-Hindu name for captive elephants, right? Captive elephants. You know that in Kerala, temple rituals, right? In South India, particularly Kerala, with the temples and the rituals, there are some elephants which are kept under captivity, right? They're trained elephant, they're captive elephants, they're used for rituals, procession, and all this part of it. You'll not only find in Kerala, but also in Tamil Nadu and Karnataka, you'll find all those kind of things. Now, in this process, what happens? There's sometimes cruelty to animals. You know that we have a law in India. There's an act, right? Parliamentary act that is called Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, where we have Animal Welfare Board of India. किसी भी प्राणी पर किसी प्रकार का है ना अत्याचार या टॉर्चर करना, उनको मारना है, उनको ये करना, वो कानूनी तौर पे जुर्म होता है. और ये इसके लिए भारत में पहले से ही कानून है. जहाँ पशु या किसी प्राणी की क्रूरता के विरुद्ध भारत का 1960 का कानून है, जहाँ पर प्राणी कल्याण बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्क इनटू दैट. नाउ व्हाट इज अनदर थिंग हियर? Many times we come across the reported news that elephants under captivity, when we take wild elephants and put into captivity, they're not given proper food, the care, they're beaten by the owners. These all have been reported many times. कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन था, उस समय एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ केरल से आया था जो काफ़ी वायरल हो चुका था. एक प्रेग्नेंट राइट फीमेल एलिफेंट कैरिंग इन हर यूट्रस, in uterus she was pregnant, carrying elephant. She was offered pineapple with crackers and she suffered agony, pain, suffering. She kept on crying for help, but she was brutally offered those crackers and in the mouth of this pregnant female elephant, and in a small pond water body she died. And so the baby inside the uterus. बहुत ही मतलब शर्मनाक, बहुत ही घिनौना ये घटना हुई थी जहां पे इस तरह के हाथी को मार दिया गया था. FIR was also registered. Case went to the National Green Tribunal (NGT) bench of Chennai to look into the matter. But since Wildlife Protection Act 1972
is outside the purview of National Green Tribunal, but the matter was taken from other law perspective there, like Cruelty to Animals Act and all this comes into that. Environment एक subject है जहाँ पर the law, legal provisions are also connected with that, and one must be aware of that. Now, what is very interesting, when elephants are kept in captivity, they are given names. Even the forest, in the wild elephant, in the forest, they are also given names. So, what is this article here? Is linking with religion, non-Hindu link. For captive elephant, still taboo in Kerala. यानी कि केरल में जो हाथी जिसको पाला जाता है उनका नॉन हिंदू नाम देना अभी भी उसको एक टैबू माना जाता है. ये इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव नहीं है, मतलब मेरा कहना है कि मैं इन्वायरमेंट को सोशल एस्पेक्ट से लिंक कर रहा हूँ. आई एम लिंकिंग विद कल्चरल एंड सोसाइटल एस्पेक्ट देयर. Environment is a very dynamic subject. You can connect with any kind of such area there. And now you can see here, see as a major part of their incomes coming from temple festivals. See, the temple festival, owners don't prefer to give names associated with another faith. Even though the owner of that elephant, even though the owner of the elephant may be non-Hindu, है ना. आपको पता है कि केरला is called God's own country. All three religions like Christians, Hindus and Muslims, they all are there in proportion in Kerala. And Kerala being a secular state, which respect religion and all, there. So again, you see, since elephants are employed in the temple rituals, festivals, even the owners of the elephant who are non-Hindus, they still prefer to give their elephant name Hindus names. जबकि अपने धर्म के अनुसार उसका नाम दिया जा सकता है. तो ये थोड़ा मैं सामाजिक एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, मैं धर्म के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो है. तो ये थोड़ा आर्टिकल मुझे लगा कि उतना रेलेवेंट यूपीएससी एग्जाम में नहीं हो सकता है, लेकिन एज ए जनरल पार्ट ऑफ है यहाँ पर है. तनवीर इज ऑल्सो गिविंग द आंसर दैट इन मीनाक्षी टेम्पल वी कैन सी मेनी एलिफेंट्स. यस, यू आर राइट. इन तमिलनाडु देयर ह्यूमन्स आर वर्स्ट काइंड ऑफ एनिमल्स. यस, that is again true. What you are saying is very, very true there. That part of it. So that's what I bring, that even a state like a secular state like Kerala has this kind of a notion of not giving the names there. So that is what this I have come across this part of it. Now another thing here, cheetah. Cheetah, right? Now all the news which is coming here about cheetah here, that is a Kuno, death of the cheetah. One more cheetah has died. African cheetah which has been brought from Africa to Kuno National Park in Madhya Pradesh. Again that cheetah has passed away. तो अब यहाँ पे बहुत क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमारा जो हमने जो प्रोजेक्ट लाया रीसेटलमेंट ऑफ अफ्रीकन चीता टू इंडिया really is a useful in that context, right? ये इसी मतलब अभी 10-15 दिन के बीच का ये न्यूज़ है ना. बहुत ही पॉम्प शो के साथ अफ्रीकन चीता को जो इंडिया में लाया गया, कुनू नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया. इवन द पीएम नरेंद्र मोदी वेंट टू रिलीज द अफ्रीकन चीता टू द कुनू नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश. But now what we are finding continuously in the reports, we are coming about the death of cheetahs. So the question mark is that bringing African cheetah to India and trying to make them grow and multiply and adapt to Indian forest and survive, whether they will be able to really adapt and will be really able to survive in India. Now a doubt has arisen. There is a doubt has come up there. And you all know that if you are following the news, you are aware of that. Even there were skeptics, there were people who were saying that it is not a good idea to bring African cheetah to India. So you all know that Indian cheetah has become extinct, right? We have already lost Indian cheetah. But now from the Namibia, we got the batch of cheetahs. Then the next batch of cheetahs arrived to India from South Africa, right? Now the question has come that how really this project is going to work in coming times,
that is just yet to be seen. And you know, cheetah is the very fastest land animal, and they can adapt to such kind of extreme environment, particular dry kind of scrub kind of grassland kind of environment. That's why Kuno National Park MP has was selected as a habitat. So you can see here the male cheetah Tejas. What is the name of the cheetah? Tejas. The male cheetah Tejas was brought to the park from the South Africa in February. ये जो चीता आप जो देख रहे हो, this cheetah, the cheetah what you are seeing right now, this cheetah was brought from the South Africa. Right? It was brought from South Africa. Its name is Tejas. Just February month it was brought there. But that with this 7 felines, that is a 3 cubs born in Namibian cheetah, ज्वाला. नमीबिया की एक चीता जो ज्वाला है, उन्होंने 3 बच्चों को जन्म भी दिया था, राइट. और सबसे पहले नमीबिया से जो चीता आया था, आउट ऑफ दैट हैव डाइड इन द पार्क सिंस मार्च. The Namibian Jwala female cheetah which have given birth to the cubs were not able to survive. Then what is another thing here? That is another thing now. South Africa, this Tejas cheetah which was brought, it was also not able to survive in Kulu National Park. So that now the question is again, we have to again relook that, whether this ambitious cheetah reintroduction program, right, is really going to help in long term. Right. So that is one thing which I have brought here, which you must be keeping knowing about it. Now coming to another news here, India and China, Pangong Lake. Right. In terms of Pangong Lake, you know Pangong Lake. Where is Pangong Lake? Where is the Pangong Lake? It's a beautiful lake. You all are aware of that. All of you are right now maybe aware of that. Pangong Lake is in Ladakh. You all know about Pangong Lake. Pangong Lake is in Ladakh, is a beautiful lake, is a transboundary lake. India and China, LAC, line of actual control. And both the side of border, LAC, India and China, they have their kind of posts are there. And this lake is a very large lake. Although Pangong Lake has not been declared as Ramsar site of India, but it's a very beautiful and very important kind of lake. You can even say wetland of India. It's a glacial lake of Ladakh. Now this has made in the news that you know that Galwan Valley, where India and Chinese troops they had a conflict there, right? Then now again the Pangong Lake around the Chinese are they are increasing their military presence. What you see the photograph here. So although this story is about military and national security point of view, where LAC and along this Pangong Lake, the part of the Chinese movement and the aggressive nature of China with making the post and moving ahead, that will be reported. Now what is very important from environment perspective, environment and geography perspective, Pangong Lake, that is important. Pangong Lake important है. ये large beautiful lake जो है इंडिया का, जो कि लद्दाख में है, although it is not a Ramsar site, but maybe in future government of India can declare the part of the Indian part of Pangong Lake as a Ramsar site, and it's a beautiful transboundary lake. आपने ये फिल्म में देखा होगा, there's a movie you know that, a Three Idiot movie में है ना रांचो ये बड़ा सा जो लेक है, a blue color beautiful lake in Ladakh, and is a tourist hub also. Many times the tourists go to this lake to see that. So this lake, caught the attention of the people audience in this movie called Three Idiot, where the Rancho, that's Fungsu Wangdu, the cat is inspired from real person Sonam Wangchu, right? So this lake around that, but is again security wise is very very important, right? Across this lake you will find birds, migratory birds comes there. Central Asian flyway, the birds arrive to this one. It's a glacier lake. Water gets from melting of glacier. You know that Himalayan glaciers and all this. Plus you have a Kyang. Even the desert, there are some kind of ash kind of thing is there. Double humped camel is found there. Right. So is also rich in biodiversity part.
There's another bird which is very very important bird, which is also found in Somoruri wetland, which is a Ramsar site of India. Right, same bird which is migratory bird, black necked crane, kale gardan wala saras, that is also found in around this area there. Right, you'll find this particular area that that particular bird is also found here. So this was the article here. Is given that from the military point of view, that is where the Pangong Lake, where the both the part of our army, right, trying to assert their presence there. But you have to study from environment and geographical perspective also. कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड जोग्राफी का पर्सपेक्टिव में एग्जाम में आ जाए, तो वो आपको पता होना चाहिए. तो yes, Tanveer, you are very right. Sonam Wangchu there, that's a part of it, right? So that's really good. Now just move on to the another very important article, which is very very important from, again, from exam perspective. You can take that. That is a part of what you find here. It has been again making very very beautiful headline was there. बनारस, आजकल बनारस काफ़ी न्यूज़ में है, राइट. बनारस इज वेरी मच इन द न्यूज़ देयर. आई फाउंड अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज अबाउट टर्टल्स, फ्रेश वाटर टर्टल्स, विच हेल्प क्लीनिंग द गंगा. दैट वॉज रिपोर्टेड इन द हिंदू पेपर. What you find here, this particular has been reported there. So in Varanasi, turtles help clean the Ganga. You know, sometimes in the exam, linked with biology, ecology with biology, questions are asked. Like when you talk about turtles, tortoise and turtle. Turtles are freshwater, turtles are marine or marine also. Right? Now this article which comes here, what you find here, first let me zoom out the photograph. This is what was shown in the part of it. What you see on that, the turtles are there. There is a freshwater riverine turtles, and इसको 1980s में सेटअप किया गया था. This was set up in late 1980s. Turtle Rehabilitation Center. Turtles Rehabilitation Center. Right? So far released 40,000 turtles. 40,000 turtles को वहाँ पर रिलीज किया गया है into the river. Right? 40,000 turtles, which has been released. This freshwater turtles here, right? What you see this image, right? All these are turtles here. So around 40,000 these turtles are released into the river by a conservation organization called as a Turtle Rehabilitation Center. Turtles are omnivores. They can eat aquatic plants, at the same time aquatic animals like fishes and all they can consume, and they are scavengers. Cleaning मतलब scavenging. जैसे गिद्ध, vulture is a scavenger. Turtle, dolphin, even dolphins. You know, river Ganga has got Gangetic dolphin, right, which is a national aquatic animal of India. Gangetic dolphin. They also clean the river. They have the ability to eat dead matter. They consume dead matter, thereby cleaning the river. So ये आर्टिकल मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि 2600 किलोमीटर स्ट्रेच जो रिवराइन जो ये जो गंगा जो है वहाँ पर टर्टल्स का जो है, एंड दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन डन अंडर नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, दैट हैज़ बीन गिवन. एंड 2014, you see here 2014, Wildlife Institute of India, right? Wildlife Institute of India, they took this initiative, and then Wildlife Institute of India under this National Mission of Clean Ganga और नमामि गंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के तौर पे टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर को सेटअप किया गया, एंड दिस टर्टल्स वे रिलीज्ड, राइट. तो हाउ टर्टल्स हेल्प, नाउ दिस आर्टिकल also talks about how turtles help. So these turtles, what is saying here, even another thing there, Chambal region also, their turtle eggs are monitored for 70 days by scientists there, and then they're incubated by 27 to 30 degrees Celsius, which hatch
to give birth to the small turtles there. And what turtles do here, the quality of water, it maintains the quality of water. Even it helps in the dissolved oxygen. जो बीओडी वगैरह जो होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करने में टर्टल्स का योगदान होता है, राइट. दैट्स व्हाट कम्स हियर. तो उसको स्टडी किया गया कि इस टर्टल्स को, फ्रेश वाटर टर्टल्स को इंट्रोड्यूस करके, व्हाट साइंटिस्ट डन, दे हैव इंट्रोड्यूस दिस टर्टल्स एंड देन दे मॉनिटर द quality of the water over 3-4 years. They measured dissolved oxygen level, they measured biological oxygen demand BOD, right, all this part. They found there was significant decrease in the BOD level. That means water got purified. BOD अधिक होना मतलब यूट्रोफिकेशन ज़्यादा होना, पोल्यूशन ज़्यादा होना, तो यहाँ पर कम वहाँ पर है. At the same time it also found the dissolved oxygen level increasing, क्वालिटी ऑफ वाटर गेटिंग इम्प्रूव्ड, राइट. तो ये एक बहुत अच्छा स्टडी किया गया है जहाँ टर्टल्स के पॉइंट ऑफ व्यू है. तो आपको क्या करना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ क्या करना है, एक तो ये पता होना चाहिए कि टर्टल्स जो होते हैं, है ना, दे आर बिगर इन साइज देन टॉर्टोइज. दे लिव इन वाटर, बट फॉर लेइंग एग दे कम टू द बैंक ऑफ द रिवर, और इफ इट्स मराइन देन विल कम टू द कोस्टल एरिया. एज यू नो, ऑलिव रिडली टर्टल्स, ओडिशा, गहिर माथा, बट ऑलिव रिडली टर्टल इज अ marine turtle, is a marine turtle. Leatherback turtle is a marine turtle. But when you talk about this kind of Ganga, Brahmaputra river, sometimes wetland, freshwater turtles, like soft shell turtle, right, all a roop turtle, red crowned roop turtle, ये सारे जो है फ्रेश वाटर टर्टल्स होते हैं. ऑलिव रिडली और लेदरबैक दे आर मराइन. तो व्हाट इज द टर्टल्स आर बिगर देन द टॉर्टोइज, एंड दिस दे आर scavengers. They clean the river system, right. So they did this kind of study under the project. So that's what when UPSC will ask question, तो ये सब होता है कि turtles are omnivores or carnivores or herbivores, are they scavengers. That is biology linked with the environment ecology part, right. That's what I have mentioned here, what you see here, ठीक है. That's what good there. The people who are right now have joined, I can see their the response also there. Anything you want to ask here about this article? You understood that what study they have done. So from exam point of view, you should know the turtles there and the part of it, right. This is the article which came in the newspaper, right. So that is one part which I have just mentioned about it. Now look at another thing here. Europeans who died in sweltering heat waves last year, 61,600, that is the number. A study has found that Greece, Italy, Portugal and Spain saw the highest death rate according to the population size due to heat waves. Now heat wave has become a killer. The summer, है ना, गर्मी के टाइम जो है इस बार का, every summer is very hot, warmer than the previous summer. And this time again, in India also, during the summer, it was very extreme heat and there was heat wave condition. Even in India, people die of heat waves, right. ये तो एक figure है which has come from European countries, that is 61,600 people have died in Europe itself from heat waves. Now this is the climate change impact, right. The kind of global warming and climate change impact which is now taking place, there's really a severe problem there. And this time from geography you have studied that this year being more warming because of the El Nino effect. So here what you find here, one is this where in terms of rising temperature, right, where the temperature being rising here, that is in terms of global warming. And second, El Nino, yes, you are very correct, Tanvir, that is a global warming where the temperature rising there, and another event, the El Nino effect, where the warming of the ocean, it has also created severe aspect of this heat wave, right, in Asia and other region there. But again now Europe is getting warm. Now where this is very, very important for examination,
ये कहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए? ये इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली जो है मेंस एग्जाम में, जहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट और वेयर यू हैव अ मेंस एग्जाम क्वेश्चन वेयर यू कम अक्रॉस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, तो यू कैन कोट, यू कैन गिव एज एग्जाम्पल, आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ मेंस एग्जाम में जहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, तो दिस काइंड ऑफ डाटा और फिगर कैन बी वन वे टू गिव एग्जाम्पल, बिकॉज हीट वेव एज अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट, राइट, बीइंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, तो वो आप बता सकते हो आप, राइट। तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में, वो डायरेक्ट ऐसा होता है कि जहाँ आपको लिखना पड़ता है ना, जहाँ पर ऐसी चीज़ क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं तो आपके पास बैकअप होना चाहिए, कुछ डाटा, कुछ फिगर, कुछ एग्जाम्पल, जिससे आपका क्वालिटी ऑफ आंसर कैन बी मच बेटर ठीक है, ज़्यादा बेटर क्वालिटी ऑफ आंसर होगा उसमें। तो उस बात को ध्यान में रखना है। कई बार न्यूज़पेपर में हो सकता है छोटा सा कॉलम हो, but that may give you kind of a very good point in terms of writing answer. Even essay in the mains exam, you can quote such kind of information there, right? So that what I found last 2 weeks. This article I found it was relevant, right? Now what happened during the summer? Drying up of water bodies. You all know that during the extreme summer, reservoir get dry up, our ponds get dry up, right? Many parts of the country suffer severe water scarcity. तो ऐसे कई आर्टिकल्स हिंदू पेपर में कवर होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक आर्टिकल आया हुआ है, दैट इज अ तमिलनाडु फ्लैग्स शॉर्टेज इन शेयर ऑफ कावेरी वाटर। अब इसका 2-3 डायमेंशन है। हियर यू हैव 2-3 डायमेंशंस हियर विच आई वुड लाइक टू जस्ट डिस्कस राइट नाउ। I'm talking about summer time. I'm not talking now rainy season. I'm talking the past 2-3 months. You know Kaveri River. Kaveri River originates from Brahmagiri, Thal Kaveri, that is a part of Western Ghats of the state of Karnataka. And its catchment area that covers the state of Karnataka, then Tamil Nadu, and also some part to Kerala. Right? And you all know Kaveri meets Bay of Bengal in the state of Tamil Nadu. ऑलरेडी देयर इज ए कावेरी वाटर डिस्प्यूट। आप सभी को पता है कि दोनों स्टेट के बीच में, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, शेयरिंग ऑफ वाटर, एंड देयर ऑलरेडी कावेरी ट्राइब्यूनल टू लुक इनटू दिस issues of water sharing between the two states. So during the summer, when there is more demand of water, and the, let's say, the river and the sharing water there, anything goes, then it creates a kind of issues there, particular for irrigation, domestic use of water, right? So now if you see here, deficit of the share of water, and the Kaveri Water Management Authority, there is CWMA, Kaveri Water Management Authority, it flagged the issue, इस समस्या को, इशू को वो फ्लैग किया गया कि उसमें क्या एग्जैक्टली वहाँ पर है वाटर स्टोरेज का। ये न्यूज़ 3 जुलाई के आसपास ये न्यूज़ में आया था, एंड देन देयर वाज पार्ट ऑफ इट देयर, and you know generally what happened, the both the states meet together. Now this is the kind of a political issues or social issues linked with the sharing of water and all. लेकिन मेरा यहाँ पर कहना ये है, because of global warming, because of climate change is having a big impact on the water cycle, hydrological cycle. एक तो झगड़े हो रहे हैं, है ना, एक तो ऑलरेडी लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, जल को डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, उसके यूज़ को लेकर लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी ज़्यादा हो सकता है, पानी कम हो सकता है, तो इस तरह के जो झगड़े हैं या विवाद है, जहाँ पर डिमांड ऑफ वाटर एंड द शेयरिंग ऑफ वाटर इशू आता है, तो दैट क्रिएट्स मोर चैलेंज कि कितना पानी छोड़ा जाए। तो ये मैं बात करूँ गर्मी के सिनेरियो में, जब बारिश आती है, वर्षा होता है, सिचुएशन उल्टा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है तो फिर ये डैम और रिजर्वायर से पानी रिलीज कर देते हैं। सो दैट इज़ व्हाट ऑल डिपेंड्स ऑन द
a scenario, water being controlled, right? Remember that water is a state subject. Under 7th schedule of the Constitution of India, it comes under state subject. State has the right to control the uses of water. But now what I'm saying is from societal point of view, from economic point of view, the sharing of water, where the interstate comes into that, is a great situation. Now I'm adding the environmental perspective. What is environmental perspective? Because of global warming, the water cycle is getting affected. The level of water or total quantity of water in the river system, that is going down. And particularly you know that rivers of southern peninsula, South India के जो भी नदियाँ हैं, they are not based on glaciers. They are rain fed. Kaveri, Krishna, Godavari, all these which originate from Western Ghats, they are all rain fed. During the monsoon, they get the rain and that's part of it. But if we talk about river system of Indus, Ganges, Brahmaputra, northern plains, they are fed by glaciers. So they are more perennial. But the rivers of southern India, South India, they are not perennial. And given the impact of global warming, climate change, the impact on the monsoon or rains, it again creates problem in terms of shortage of water. Where this becomes very important in terms of मेंस आंसर राइटिंग पार्ट. मेंस आंसर राइटिंग में वो इंपॉर्टेंट होता है. तो ये चीज़ है, ये न्यूज़ में हिंदू पेपर में दिस आर्टिकल केम, दिस आर्टिकल वाज देयर. सो दिस इज अगेन आई एम गिविंग हियर वेयर इट वाज गिवन देयर. एंड अगेन द सच मीटिंग ऑलवेज एंड्स अप विद फेलियर. दोनों पार्टी अड़े होते हैं कि एक पार्टी कहता है कि हम इतना ही पानी देंगे, है ना, और दूसरा पार्टी ये अड़े होते हैं कि हमें इतना पानी चाहिए. तो दैट इज वेयर द विवाद होता है. वन पार्टी विच कंट्रोल द वाटर डोंट वांट टू गिव so much water, other party which require more water demand more water, and that's where the dispute is all about, right? So that's what comes into that. Now yes, groundwater use is also another problem there. Tanvir is mentioning that this groundwater use is now what is happening here again, the more extraction of groundwater. Yes, recently there was a news because of over extraction of groundwater, the tilt of axis of earth's axis, the tilt of the earth axis, our earth is tilted 23.5, right? The tilt of the earth, that is changing because of too much extraction of groundwater. That's related with the mass of the earth, mass being changed there, right? You are very correct there. That is also very, very correct there. Now more people are joining there. Welcome to my channel now. Right? This is what I have mentioned here. There, this kind of things are there. Now, during the summer time, another news was there. Artificial rain making experiments. ये न्यूज़ में था, राइट? आर्टिफिशियल रेन मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स, ये 6 जुलाई का न्यूज़ है, राइट? वेयर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, where IMD proposed for this kind of artificial rain making to those areas which are water scarce region. Now my question to the class is that how artificial rains are made? Yes, my dear students, how artificial rains are made? You can give me, you can write your comment. I can see your comment there. आर्टिफिशियल रेन कैसे होता है जहाँ पर वाटर डेफिसिट है? अभी हिंदू पेपर में कवर किया गया है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, टू हैव दिस काइंड ऑफ आर्टिफिशियल रेन मेकिंग देयर. सो यस, हु विल टेल मी देयर? Yes, I'm looking at your comment here. So let me get into that information here, right? So yes, olive and all this comes in. Yes, tell me about artificial rain making. You are aware of that. Silver iodide. Use of silver iodide, right? Which can be sprinkled in the sky, in the atmosphere, where the raindrop can collect it and precipitation, causing the rainfall. Yes, I've got the answer. Yeah, very good. Cloud seeding. Yeah, Shreya has come into that. Yes, Tanvir is also right. Silver iodide is used in the cloud. Yes, very true. So you know that what happens with the helicopter or aerial thing, the silver iodide is sprayed, which collect the raindrops and then cause the rain. So that idea, because of
those areas where water scarcity is there and rain is not there, there the IMD, Indian Meteorological Department, which is scientific organization, came out with this idea of artificial rain making. So now if you see here, this one, I'm taking through the article here. The article was this one. This article, it talked about this particular artificial rain making experiments. Now this, what is very important here, ये कहाँ पर किया गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, that is called Thiruvellur, right, near the Madras or near the Chennai. Old name Madras, but the Chennai. There is a city called Thiruvellur city near the Chennai. Their IMD has started with this process there. And what has been done here? There is a program called MONEX. What is the name of the program? MONEX. You all can read that, MONEX, monsoon experiment. And this has been done with the Russia collaboration, Russia and all this. And this experiment has also been conducted at Jaipur, Agra and Pune, right? Jaipur, Agra and Pune, again the dry area where the artificial rain can be done there. And there is a government program called MONEX, monsoon experiment, that got completed by July 10th. And what they have done the observation, they have carried out the observation from a range of 20 kilometers at different points in the Arabian Sea. Even they did the atmospheric studies under this program. Another very good article I found in the Hindu paper, right? I found in the Hindu paper. ये मुझे हिंदू पेपर में एक अच्छा आर्टिकल मिला, जहाँ पर अभी जस्ट अभी 7 जुलाई के पेपर में ये आर्टिकल दिया हुआ था, जहाँ पे एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात किया गया. इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ क्या इंपॉर्टेंट है? मोनेक्स इंपॉर्टेंट है, MONEX, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दिस वॉज आर्टिकल विच आई हैव जस्ट डिस्कस्ड राइट नाउ, दैट वॉज इन द न्यूज़, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन. ये तो हो गया गर्मी के समय. अब बारिश की बात कर लेते हैं, राइट? गर्मी के समय में बेतहासा गर्मी, हाई टेम्परेचर, सारा कुछ, लो प्रेशर, 40 से ऊपर टेम्परेचर, हीट वेव, पानी की किल्लत, राइट? ऑल दिस वेर देयर. फिर क्या हुआ? मानसून आया. एंड यू नो दैट दिस टाइम डिलेड मानसून हैज कम क्वाइट लेट. And after coming of monsoon, the amount of rainfall, record breaking rainfall, and now the situation has become flood like. अब उल्टा हो गया, अब बाढ़ वाली स्थिति हो गई है ना? ये आप सबको पता है. भारत में ये रिकरेंट जो है, ये हमेशा ये प्रॉब्लम है. और इस बार जो है दिल्ली में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, राइट? जब मानसून आया तो पूरा रिकॉर्ड टूट गया. हाईएस्ट रेनफॉल इन 1 डे इन 20 years ड्राउन्स दिल्ली. दिल्ली डूब गई. अब ये सारा हेडलाइंस है, ऑल दीज आर इन हेडलाइंस, राइट? हाउ मच रेनफॉल दिल्ली रिसीव्ड? 128 millimeter rainfall between 8:30 AM in the morning and 5:30 PM in the evening on Saturday. Last Saturday, right? This was this Saturday here. This they have been there. The leading to water logging. You know, water logging, traffic jam. कई बार गाड़ियाँ खराब हो जाने पे. अभी एक और भी न्यूज़ में है कि एक बेचारा ऑटो वाला पानी में था, नीचे वो गड्ढा था, बेचारा गिर कर उनका मौत हो गई. That auto driver died in that falling into that in that waterlogged area where there was a गड्ढा. ट्रीज फॉलन. आपको पता है ये सारा जो अभी न्यूज़ में है. जब गर्मी है तो उस समय पे बारिश की किल्लत, पानी की किल्लत, और जब बारिश आने के बाद अपोजिट हो जा रहा है, राइट? नाउ लुक एट हियर, क्यूमुलेटिव रेनफॉल अगर हम देखें डाटा, अगर इस सीज़न की हम बात करें, इफ वी टेक आउट दिस सीजन हियर, क्यूमुलेटिव रेनफॉल दिस मानसून सीजन इन इंडिया हैज़ बीन 243.2 millimeter. Eastern and northeastern region have recorded 17% deficiency. North India has witnessed 59% excess rainfall. See the difference. ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आप देखो, आप क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है दैट इज क्लियरली विजिबल.
That is eastern part of the country and northeastern part of country has seen the 17% deficiency. यानी कि बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पर डेफिसिट की देखिए बात की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन का, जो इधर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सारे बेल्ट की बात करें, मध्य प्रदेश वगैरह जो बात, तो हम ये पाते हैं 59% एक्सेस, 59% ज़्यादा वर्षा वहाँ पर है। और जबकि डेफिसिट साउथ इंडिया हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 45 to 23%। कहने का मतलब दक्षिण भारत में भी, राइट, साउथ इंडिया में भी जो जहाँ पर वाटर डेफिसिट 45% होता था, अब वो घट के 23% हो गया है। यानी कि इवन द साउथ इंडिया हैज़ गॉट मोर रेनफॉल। ओवरऑल द कंट्री हैज़ रिसीव्ड 243.2 मिलीमीटर दिस एवरेज रेनफॉल। अभी तक का ये डाटा है। अगेन व्हाट आई एम सेइंग, द डाटा ऑलवेज हेल्प व्हेन यू राइट गुड आंसर, वहाँ हेल्प होता है। नाउ यू नो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस रेनफॉल। ये आपने देखा है, यू ऑल हैव सीन दिस सिनेरियो देयर। यमुना फ्लडिंग इन दिल्ली, दिल्ली में यमुना उफान पे, और जो भी यमुना फ्लड के लो लाइंग एरियाज है, दैट ऑल गॉट सबमर्ज्ड विद वाटर, राइट, दिस ऑल गॉट सबमर्ज्ड विद वाटर, राइट, यमुना गॉट फिल्ड विद वाटर। You all know that. This, you are all aware of it. जो सिचुएशन है, आप देखो ये फोटोग्राफ देखो आप, यू सी दैट, सी हाउ द सिचुएशन हैज बीन देयर। दिस इज अ पार्ट ऑफ द दिल्ली व्हाट यू कम अक्रॉस। यमुना फ्लड प्लेन और यमुना के आसपास रहने वाले लोगों की ये हालत दिल्ली में हुई है। दिस व्हाट यू फाइंड हियर, और ये सब न्यूज में, दिस ऑल इन द न्यूज। तो द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट with the social economic impact because of the rainfall, and this is because of the global warming and climate change impact. Now another aspect here, 1978 tragedy. Newspaper has reported that Yamuna flooding, right, 1978 and 2023. 1978 again many people died because of this situation there. राइट, व्हाट यू सी हियर, दिस इज रिपोर्टेड इन द हिंदू पेपर। 78 में जो इस तरह का जो भयावह सिचुएशन हुआ था, आज फिर दिल्ली जो है जलमग्न हो गया। आधी से ज़्यादा दिल्ली जो है पानी से भर गया, जल से भर गया, राइट। नाउ यू सी हियर व्हाट इज गिवन हियर, दैट लॉट ऑफ प्रॉब्लम देयर, लो लाइंग एरियाज देयर, द पार्ट ऑफ देयर। दिस इज द आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट the Yamuna and the flooding part, right? Now if you see further, ये जो है, you know this photograph, बहुत लोग जो दिल्ली में रहते हैं, आप इस रास्ते से गुजरे भी होंगे। ये ठीक लाल किला के पीछे का भाग है। दिस जस्ट एट द बैक साइड ऑफ द लाल किला इज बेसिकली रिंग रोड, वी कॉल इट रिंग रोड, राइट, MG रोड, महात्मा गांधी रोड, रिंग रोड, back side of the Lal Killa, from Rajghat when you go to ISBT, आप जब राजघाट से ISBT जाते हैं, इंटरस्टेट बस टर्मिनल, ITO राजघाट एंड गोइंग टुवर्ड्स कश्मीरी गेट, यू विल क्रॉस दिस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल ब्रिज। नदी बन गया है, क्या बन गया, नदी बन गया। यू कैन सी द पीपल आर ऑन द बोट, राइट, पीपल आर ऑन द बोट, विद बोट राइड हो रहा है वहाँ पर, जहाँ गाड़ियाँ दौड़ती थी वहाँ बोट राइड हो रहा है। ये हालत हुआ है यमुना के बाढ़ के कारण। द यमुना फ्लडिंग हैज़ कॉज दिस थिंग इन दिल्ली हियर एंड इज आइकॉनिक हेरिटेज साइट दैट हैज़ बीन इम्पैक्टेड बाई फ्लड वाटर ऑफ रिवर यमुना, राइट। तो मेरा ये कहना है प्रकृति के साथ हम जितना खिलवाड़ करेंगे, प्रकृति उतना ही करेगा। देयर सेइंग सेज नेचर प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट नेचर। प्रकृति रक्षति रक्षता, राइट। इफ यू प्रोटेक्ट द नेचर, नेचर विल प्रोटेक्ट यू।
And in real sense, this is all anthropogenic. What is anthropogenic? Human activities. Today, the global warming, climate change, and the impact on water cycle and the rainfall are all man-made. They're all linked with human development. ये सब वार्निंग है. दिस आर द वार्निंग व्हाट नेचर गिव इट टू अस. नेचर ये हमें चेतावनी दे रहा है, हमें बता रहा है कि देखो प्रलय आएगा, अगर आप नहीं संभलोगे तो ऐसे प्रलय होंगे. और एक बहुत कहने वाली बात है ना, नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है. रिवर फाइंड इट्स ओन कोर्स. We don't have to do that. River finds its way. Yamuna has found its own way. Right? This is what you will find here. And what you see in the boat, in this photograph, what you see in the boat, that is a battalion, NDRF battalion, National Disaster Response Force, NDRF team. Their battalions are on this raft kind of part, and there is a flooded road which pass under this particular bridge. Is a heritage site, backside of the Lal Killa and Red Fort. Right, and this is the scenario of Friday. बस एक दो दिन पहले की बात है. ये मंजर है दिल्ली में. Right, this is what you can find that. ये तरीका वहाँ है. Western disturbance is also responsible. Yes, Shreya, you are very correct. Shreya, Western disturbance in terms of spell of rain is also responsible there. Yes, Tanveer, El Nino year, heavy rain there. Yes, all these are correct there. Now what do you find here? There's all the flood water which has been poured there. Now you see further evacuation. Hindu paper has reported about the NDRF team and all the evacuation part. A man walks into flooded part of the river here. You can see here, and part of it. So again, every year the monsoon जो part है, North India's monsoon, right? Is global warming the only factor? अब यहाँ क्वेश्चन ये आया कि North India's monsoon mayhem, this type of disaster and tragedy, can we blame only the global warming, El Nino effect, Western disturbance? अभी मैंने क्या बताया, El Nino एक नेचुरल इवेंट है एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नेचुरल इवेंट है, लेकिन जो चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन हो रहा है, that is because of greenhouse effect and the global warming, and what it causes, the gases, greenhouse gases, the anthropogenic emission, carbon emission. Ultimately, who are responsible? We humans are responsible, right? We humans are responsible. ये आर्टिकल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले दिपोर जॉय, राइट, दिपोर जॉय भी था, जो कि अरेबियन सी में आया था साइक्लोन. You all know that cyclone, and that has a impact there. Now monsoon has been, now again the part of monsoon has got disturbed there, right? Then did climate change influence this monsoon? Now this is the question here. This is the question what you find. The impact of climate change has always been of great interest, right? With global warming, warm and humid atmosphere act as a steroid, like a steroid kind of for the weather. And every weather event has some contribution from global warming. बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा जा रहा है. हर तरह का जो मौसम में जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से लिंक्ड है, राइट? और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है उसके लिए मानव जिम्मेदार है. मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. व्हाट अदर फैक्टर्स? इसमें जो बाकी फैक्टर्स क्या रहा है इस हेवी रेनफॉल के लिए? तो यहाँ पे जैसे द इंडियन सबकॉन्टिनेंट लाइक अ पॉपकॉर्न केटल. कभी आपने पॉपकॉर्न खाया होगा केटल में डाल के उसको ढक के प्रेशर एंड द हीट, सन का जो हीट और जो होता है, और क्योंकि इस बार गर्मी में मार्च में बहुत एक्सट्रीम हीट था, इट बिल्ट अ लॉट ऑफ लाइक अ लो प्रेशर ओवर दी नॉर्दर्न प्लेन्स. इस बार इतनी गर्मी हुई है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो नॉर्दर्न प्लेन है दिल्ली एंड अदर प्लेन, इट गॉट हीटेड लाइक एनीथिंग. वेरी स्ट्रॉन्ग हीट, राइट? द राइज ऑफ एयर, it created a very low pressure there, which from high pressure wind which brought the rain to the part of Delhi and this part, and the heavy rainfall was there. Northwest से जो flow आया western disturbance, that brought more rainfall to the part of this region.
राइट, दिस वर्ड गिवन हियर। तो सिंस जनवरी ये पूरा जो गर्मी का मौसम रहा है, तो वो पार्ट है यहाँ पर। नाउ यू सी फर्दर, यमुना इंचिंग क्लोजर टू डेंजर मार्क, गवर्नमेंट स्टार्ट इवैक्यूएशन वर्क। अब एक जो ये चीज़ है जहाँ पर व्हाट यू सी हियर ऑन द यमुना साइड एंड दिस इवैक्यूएशन वर्क ऑफ, जो यमुना फ्लड प्लेन के आसपास जो गांव हैं, लोग रहते हैं, उनको निकालना, सेफ जगह ले जाना, ये सारा काम किया गया। और यमुना में हर साल ऐसा होता है कि बारिश के टाइम पे यमुना इज़ नो मोर ए नाला। अगर गर्मियों में बाकी टाइम देखें, यमुना लुक्स लाइक अ ड्रेन, लाइक अ नाला, बट बारिश के समय में आपको यमुना सही नदी के रूप में दिखेगा। इट लुक्स लाइक अ रिवर देयर। अब इसका एक और कारण है, देयर इज अ रीजन फॉर हाई वाटर मार्क इन द यमुना रिवर इज ऑल्सो अनदर रीजन, दैट इज अ स्टेट ऑफ हरियाणा। हथनी कुंड से, बराज से पानी को छोड़ा जाता है। व्हेन देयर इज टू मच ऑफ रेन एंड दैट बराज इज नॉट एबल टू होल्ड दैट मोर वाटर, then the state of Haryana, they release the water, and that entire water flows to the river Yamuna, and that raised to the level of Yamuna river, है ना। इसका एक और ये जो है यहाँ पर रीज़न है कि जहाँ पर जो ये जो आप देख रहे हो, आपने ये सबवे यूज़ किया होगा, जो कि प्रगति मैदान से जो है इंडिया गेट तक में शॉर्ट डिस्टेंस वहाँ पर आता है। ये पूरा का पूरा पानी से भर गया, right? You get all went into the water there. Again, you know that's part of it. तो अब इसमें यही चीज़ है, इसमें अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट एंड ऑल, दे हैव बीन ब्लेमिंग द हरियाणा गवर्नमेंट फॉर रिलीज ऑफ दिस एक्सेस वाटर टू यमुना रिवर। दैट्स व्हाट यमुना इज ओवरफ्लोइंग। हथनी जो ये जो बात है, आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी स्पार ओवर रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम हथनी कुंड एंड ITO बैराजेस। अब यहाँ पॉलिटिक्स आ चुका है। Now the politics has come up there. That is saying that 1.62 lakh cubic of water was released from Hathni Kund barrage in the state of Haryana, right? And that is now resulting into overflowing of river Yamuna. ये पानी का रिलीज हर साल होता है ना। ये पानी का जो रिलीज है हर साल होता है। हर साल बारिश के समय में हथनी कुंड बैराज वहाँ जो है, तो जब एक्सेस होता है तो वाटर रिलीज किया जाता है। और इस बार क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में कि हम ब्लेम गेम करना ज़्यादा जानते हैं, हम उंगली उठाना ज़्यादा जानते हैं, यू नो, पॉलिटिकल काइंड ऑफ राइवलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जबकि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट शुड सिट टुगेदर टू फाइंड सोल्यूशन। ये एक साल की बात नहीं है, ये इस साल दिल्ली की बात नहीं है जब यमुना डेंजर लेवल से ऊपर है, इससे पहले भी हो चुका है। अगर गवर्नमेंट्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे शुड हैव कोऑपरेटिव मैकेनिज्म। साथ में मिलकर ये एक मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी से उठकर होना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये समझना चाहिए कि लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों का घर बार खराब हो रहा है, पीपल हैव टू बी इवैक्यूएटेड, चिल्ड्रन हैव टू बी टेकन केयर, ओल्ड एज पीपल हैव टू टेकन केयर। It is a situation of emergency and disaster. So why not government go beyond politics? They sit together, they can form high-level expert committee, can examine the issues, come out with recommendation. Government of Delhi, government solution निकाले। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, it's possible. But unfortunately, in our country's political system is only blame game. Is only blame game. You are responsible. You are responsible. Nobody want to take the blame on oneself, or they come together to look into the problem and solve the problem. That doesn't happen. हथनी कुंड बैराज का पानी का रिलीज और ये चीज़ हर साल होता है, बारिश के समय हर साल होता है। और क्योंकि इस साल बारिश ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा रिलीज किया गया है। ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ बहुत कम जहाँ जो है वो वहाँ पर इस पर ध्यान दिया जा रहा है। But I have just brought there, political aspect, I have just brought there, this can be solved. Now what I'm coming, a very important article, I'm going something, water mission may miss 2024 targets. We have national water mission, central government, जल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, जल जीवन योजना,
हर घर में जल, हर घर में नल, ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ इंडिया. बट द आर्टिकल सेइंग विल मिस दिस टारगेट. ये टारगेट जो है मिस हो जाएगा. विल नॉट बी एबल टू रियली प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू ईच हाउस होल्ड एज पर आवर टारगेट बाय 2024. राइट. तो पानी सबको चाहिए ना, वाटर भी रिक्वायर्ड. एंड यू नो द वाटर फुटप्रिंट ऑफ इंडिया इज गेटिंग हायर एंड हायर. More consumption of water is required there. So another this very useful article has come. So what is very important from UPSC exam or any kind of exam, you should know the mission, water mission and the objective. So here the Har Ghar Jal initiative to rural household in India, providing them potable drinking water. So we are going to miss that target. Only 75% of village homes are likely to have tap water. नल का पानी, पीने लायक पानी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में 75% घरों में ही उतना ही टारगेट का लक्ष्य पूरा हो पाएगा, 100% नहीं हो पाएगा. ये अभी आर्टिकल आ रहा है. राइट. तो यहाँ मैन पावर शॉर्टेज की बात की जा रही है ना, और भी बाकी जो प्रॉब्लम जो है उसकी बात की जा रही है. बट अगेन ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन देयर. राइट. So this article which comes into that. Now sometimes in Hindu paper will have some type of photograph. Raptor. Raptors are called bird of prey. बर्ड ऑफ प्रे कहा जाता है. तो एक आर्टिकल यहाँ पे ये शिकरा है, शिकारा या शिकरा बोलते हैं, SHIKRA. ये छोटी बर्ड है, ये बर्ड ऑफ रैप्टर बोला जाता है. ये कॉमनली इंडिया में देखा जाता है कई जगह पे. राइट. तो उस पर आर्टिकल आया हुआ है. एक फोटोग्राफ था, नॉट आर्टिकल. I'll say those images there. It said here, a shikra, a small bird of prey distributed widely in the country, spotted at Sarkhej Roja in Ahmedabad. अहमदाबाद में सरखेज रोजा जगह है, वहाँ इसको देखा गया. उसका फोटोग्राफ यहाँ पर है. तो ये बाकी सारे न्यूज़ हैं जो कि यहाँ पर हेडलाइंस में था, तो वो मैं कवर कर रहा हूँ. ठीक है. अनदर न्यूज़ इज द पोल्यूशन पार्ट. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT हैज़ गिवन ऑर्डर फॉर SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, टू कर्ब पोल्यूशन एट हॉस्पिटल. जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर भी कई तरह का बायोमेडिकल वेस्ट होता है. उसका प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट, उसके लिए हॉस्पिटल के पास SOP होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, ताकि पोल्यूशन कम से कम हो. तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये हॉस्पिटल्स को बोला है कि आप अपने SOP को तैयार करो और उसको अप्रूव कराओ गवर्नमेंट से. राइट. तो ये यहाँ पर दिस जजमेंट वाज देयर. देन अनदर आर्टिकल केम, चिंकारा. चिंकारा, ये हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये न्यूज़ था, जहाँ पर चिंकारा का शिकार, और उसमें जज ने वहाँ पर फाइन दिया. और वहाँ पर विजिलेंट रहने के लिए जो लोग हैं, अगर कोई भी आदमी ये बता सके किसने शिकार किया है, हंटिंग ऑफ चिंकारा, दे विल गेट पेड फॉर इट. तो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, scheduled species cannot be hunted. Recently government has made amendment to the law, but it cannot be there. So here protection of the wild, that was this here. So pay half of the fine to informer. क्या जज बोल रहा है, कोर्ट क्या कह रहा है कि अगर कोई इन्फॉर्मर पुलिस को ये बतलाता है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यह बतलाता है कि कौन से व्यक्ति या किसी ने ऐसे वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ का शिकार किया है और उसको पकड़वाने में मदद होता है, तो जो फाइन है, जो ऐसे शिकारियों पे जो फाइन होता है, जो गवर्नमेंट उस पर फाइन करती है, जो जज या कोर्ट उस पर फाइन लगाता है, और गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है, उसका हाफ अमाउंट जो है इन्फॉर्मर को दिया जाना चाहिए. ये जज का कोर्ट में ये कहना था. इससे क्या होगा कि पीपल विल बी मोर विजिलेंट, मेनी विल बी कमिंग फॉरवर्ड टू इन्फॉर्म to respective authorities of police or forest department of any kind of killing of wildlife, and that will really prevent hunting, poaching in the country, reduce the cases of hunting and poaching. Right. This case was pertaining to the hunting of chinkara, and you know that chinkara is the state animal of Rajasthan. चिंकारा जो है राजस्थान का राज्य पशु है.
तो वहाँ पर जब मैटर ये हनुमानगढ़ का कोर्ट है, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हनुमानगढ़ राजस्थान, वहाँ पर ये गया तो उसमें कहा गया कि जो भी इन्फॉर्मर है उसको जिसने पकड़वाने में मदद किया उनको जो भी फाइन है, जो जो हंटर है उसके जो फाइन लगा है उसका हाफ अमाउंट देना चाहिए। तो ये एक तरह का प्रेसिडेंट है जहाँ पर ऐसे इन्फॉर्मर्स को या गवर्नमेंट देती है तो मोर विजिलेंस होगा ऐसे केसेस में, और हंटर या पोचर विल बी मोर केयरफुल दैट दे विल बी रिपोर्टेड बाय इन्फॉर्मर्स टू द ऑथोरिटीज। सो एंडेंजर्ड जो एनिमल का जो किलिंग या थ्रेटेन स्पीसीज का वो कम हो सकता है। दैट वाज इन द न्यूज देयर, दिस व्हाट हैज कम इनटू दैट, राइट? Then coming to here, again the rain has caused heavy rain and rough sea in Kerala and Karnataka. Another thing, again there is a flood-like situation there in South India now. है ना, excess rainfall वहाँ पर हुआ है, that part of article. Then hydrogen fuel cell buses. दिल्ली में राइट इस साल जो दिल्ली की बस है DTC बसेस है वहाँ पर टेस्ट रन किया। अब दिल्ली में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बसेस विल रन, उसका ट्रायल वगैरह किया जाएगा। दैट इज अ क्लीन टेक्नोलॉजी, यू नो, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन हाइड्रोजन, दैट विल मिनिमाइज द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। दैट्स व्हाट इंडिजिनस डेवलपमेंट हैज बीन नाउ डन देयर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैज गिवन दिस अनाउंसमेंट देयर। So now this is linked with science and technology and the curbing of pollution, air pollution in terms of the transport system in Delhi, right? That what comes into that. तो fuel cell technology, hydrogen is the future. Hydrogen हमारा future है, and this kind of technology will be more and more used. And now coming to here, this is very good. in दिल्ली में डेंगू का कहर, अब जैसे बारिश अभी कम हो गई है, जहाँ जहाँ फ्लडिंग एरिया हुआ है तो मॉस्किटो विल स्टार्ट ब्रीडिंग। डेंगू, मलेरिया, ये सब ट्रॉपिकल डिजीज़ है और ये बारिश के समय में ज़्यादा होता है क्योंकि वाटर लॉक्ड एरिया होता है, दैट इज बिकम द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोस। एंड यू नो डेंगू इज कॉज बिकॉज ऑफ द पार्ट ऑफ द बाइटिंग ऑफ एडिस मॉस्किटो। तो नाउ दिस इज व्हाट हैज हैपेंड हियर, राइट? नाउ अनदर न्यूज विच हैज कम, ऑब्जेक्शंस ओवररूल्ड, फॉरेस्ट बिल गोज टू हाउस अनचेंज्ड। लोकसभा में फॉरेस्ट Conservation Act 1980 Amendment Bill has been introduced without looking into the suggestions and all given there जा रहे हैं उसके provisions को। तो dilution of the Supreme Court 1986 judgment of गोदावरम case, एक बहुत there is a very famous case of गोदावरम case जो है which extended the protection to wide tract of forest जो है, that has not been taken into the borders line of control। वहाँ पर forest कहाँ पर है? Why government want to bring the change in the bill? The purpose is very simple. We want to build roads, highway, infrastructure, and you know this all will cause deforestation. इससे deforestation होगा। तो government without having seen has just introduced this bill to the monsoon session of Lok Sabha. Forest Conservation Act 1980, 1980 का कानून फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, उसमें बदलाव किया जा रहा है। उसमें एक दिया 100 किलोमीटर एरिया तक जो इंटरनेशनल बॉर्डर तक का है ना, उसको हम नो फॉरेस्ट एरिया कर सकते हैं, वहाँ हम बॉर्डर वगैरह डेवलप कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, देयर इज ऑल्सो नीड ऑफ दैट, पीपल अंडरस्टैंड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बॉर्डर एरियाज, पर्टिकुलर फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू और द पीपल हु लिव देयर, बट वी कैनॉट डू एवरीथिंग एट द कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट। वहाँ पर ये चीज़ है। नो सेंट्रल प्रोटेक्शन ऑफ वास्ट द डीम्ड फॉरेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट नॉट ऑफिशियली रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट, उसको डीम्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस कानून में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि इट कैन डाइवर्ट अ फॉरेस्ट लैंड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वो उस पर अभी डिबेट चल रहा है। तो ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल? दिस बिल, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बिल, द अमेंडमेंट बिल इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू कि दिस गवर्नमेंट विच बेसिकली हैज पावर्स अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 टू डाइवर्ट द फॉरेस्ट लैंड फॉर इकोनॉमिक यूज। So now the question is that the way the rampant deforestation which will again affect the environment, यहाँ पे इसलिए हमेशा कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है कि हमें EIA करना है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना है, हमें फॉरेस्ट के, हमें जहाँ जरूरत है उतना हमें वहाँ फॉरेस्ट को नुकसान पहुँचाना है, वाइल्ड लाइफ को पहुँचाना है, बायोडाइवर्सिटी पहुँचाना है, प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। दैट इज व्हाट हैज कम हियर। तो ये अभी इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। अभी इसमें और भी आर्टिकल्स आएंगे, द हिंदू पेपर और भी ऐसे आर्टिकल्स
अभी आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देन हिमाचल प्रदेश, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, है ना। व्हाट हैपेंड विद द हिमालयन रेंज, फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड। इस बार जो अभी जो इम्पैक्ट हुआ है, केवल दिल्ली में अधिक बारिश की बात नहीं है, पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह डेवलपमेंट हो रहा है हिली एरियाज में, और जब बहुत तेज बारिश और फ्लैश फ्लड, बहुत कम टाइम में बहुत तेज बारिश जो होता है, फ्लैश जो होता है, पूरा का पूरा जो पहाड़ को, वहाँ जो कीचड़, मड को स्लाइड करते हुए, लैंड स्लाइड करते हुए, नाउ दिस हैज अ बिग इम्पैक्ट इन हिमाचल प्रदेश। See, during rainy season, you know that in Himalayan range, the mountain hilly region are always prone to landslide, mudslide. And this time, given the factor of the more rain in a less interval time, in the case of what is called flash flood, the entire thing, mud has come to that. People were rescued. और पता है गर्मियों के समय में या इस टाइम पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे जगहों पे लोग तीर्थ के लिए जाते हैं। जैसे आपको पता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये उत्तराखंड में 4 धाम का होता है। हिमाचल प्रदेश, शिमला वगैरह जो है, लोग घूमने फिरने जाते हैं। तो बहुत सारे टूरिस्ट जो है, जो फंसे हुए थे, उनको बचाया गया। NDRF टीम वॉज कॉल्ड, मिलिट्री वॉज हैव बीन कॉल्ड टू रेस्क्यू देम। एक और इम्पैक्ट हुआ लाहौल एंड स्पीति में। आई शो यू द आर्टिकल, यू सी द आर्टिकल हियर, दिस वॉज इन हिंदू पेपर हियर, एंड यू कैन सी दैट मेनी पीपल जस्ट गॉट बरीड, rescue operation, right, rescue operation there, right, this has been done there. Then again you see rain toll points to man-made disaster हिमाचल प्रदेश। ये भी एक man-made disaster है। इसको नेचुरल तो है, बारिश ज़्यादा हुई, लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इंसान ही जिम्मेदार है। Man-made disaster, the way we have developed, the way the buildings have been made by cutting the hills, cutting the trees in the hilly areas, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, पहाड़ों को काट काट के घरें बनाई गई है, जो रेस्टोरेंट, होटल, बहुत सारा जो डेवलपमेंट हुआ है, उसका ये नतीजा है कि आज वहाँ पर लोगों की जाने गई, बहुत लोग फंसे भी रहे, राइट, हैज इज पार्ट ऑफ दिस। देन यू कैन सी हियर, अगेन यू विल सी हियर, जो अभी इसमें जो रहा है, इसमें now another thing, this another view you can see, Himalayan rivers overflowing with water. Beas river is a tributary of Indus, one of 5 tributaries of Indus, and Beas river originate from हिमाचल प्रदेश से originate होता है। Now this Beas river, because of heavy rain and flash flood, ये जो है flash flood का यहाँ पर, because of the flash flood, it was overflowing here, जो होता है ना, it has even crossed the bank, flash flood. This is the Beas river, this what you see is the Beas river which overflow with water. It overthrown the bank and affected the area there, right? What you see, this another what has happened here, and it has caused severe landslide and mudslide and all this one. Lahore and Spiti जो है, more than 70,000 people were stranded in Himachal Pradesh. They have been taken to safety because of this area here. Even recently, Sikkim had landslide. वहाँ उसको निकाला गया, ऑपरेशन हैज बीन डन, 10,000 पीपल को बचाया गया वहाँ पर, 70,000 लोगों को। असम, असम, another thing is Assam, Brahmaputra river. Assam rivers rise again after brief pause, 2,731 in camp. लोगों को इवैक्यूएट करके कैंप पर रखा गया है, राइट। ब्रह्मपुत्र नदी का जो बाढ़ है वो हर साल होता है ना, ब्रह्मपुत्र, बेकी, दिसांग रिवर्स वेर ओवरफ्लोइंग। चिरांग रिपू, चिरांग डिस्ट्रिक्ट है वेस्टर्न असम का, चिरांग में ये स्थिति है ऊपर, Western district of Chirang in Assam. That is what has been seen there. And this problem happens every year in the rainy season. बारिश में हर बार ये प्रॉब्लम आता ही है यहाँ पर. This all happens here, right? Flood situation there. So what I want to say here, whatever I have covered here, मैंने अभी क्या किया है कि पिछले 2 वीक का I have covered 2 weeks
news 1st to 15th July. From time to time, I will be discussing such current affairs based news, right, through live session, or at the same time you will also have recorded videos. ठीक है, तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू आस्क. आई होप दिस इज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू. तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी ऐसे इन्वायरमेंट के न्यूज़ हैं जो हिंदू न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस, राइट, पीआईबी, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ मैगजीन, आई एम गोइंग टू फिल्टर आउट and discuss in this kind of session there, right? I hope that this really helps you from the exam point of view, है ना, आपको ये इसका काफ़ी हेल्प हो और ये आपको रियली जो है हेल्प करे हर एग्ज़ाम के लिए. कोई केवल एक एग्ज़ाम नहीं, एवरी एग्ज़ाम के लिए वो यूजफुल रहे. सो एनी थिंग यू वॉन्ट टू आस्क, एंड आई थैंक यू ऑल फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग विद द क्लास. आई हैव ऑलरेडी टेकन around 1 hour 40 minutes. I have taken the session here. You all are here. So please share this YouTube channel link to your friends. आप अपने दोस्तों को ये लिंक को शेयर कीजिए. राइट, आई एम गोइंग टू कवर इन्वायरमेंट, साइंस टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑल विच आर रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ इट. इवन जो लोग नॉर्मल लोग भी, वो भी इसको आप देख सकते हैं. यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे इनपुट है जो कि आमतौर पे लोगों को पता होना चाहिए. राइट, कोई भी है जिसको इन्वायरमेंट सेंसिटिविटी होना चाहिए, पता होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना, ये आप लोग इसमें मदद करेंगे तो मोर एंड मोर पीपल विल गेट टू नो अबाउट माई चैनल ऑफ यूट्यूब चैनल, एंड दिस मैसेज विल स्प्रेड, एंड आई एम गोइंग टू कवर ऑल बर्निंग इश्यूज. राइट, आई विल बी डूइंग दैट. सो आई एम रियली थैंकफुल टू Tanveer, because Tanveer was all throughout the time here, and even Shreya was also full all the time there. Yes, islands in news I will also cover in next session there. Like Nicobar Island, you have a strategic development which has been done, and then again the question of risk has been given. Even the islands part as all comes into that. So I hope all of you who have been watching this my video, not only one video, not a live video, but also I have already uploaded many videos. इसमें कई वीडियोस ऐसे भी जो मेरे लाइव सेशन ऑन द स्पॉट ऑन द फील्ड है, जैसे चिल्का लगून, पूरी का गोल्डन बीच, ऑन द स्पॉट आई हैव डन दैट लाइव सेशन देयर. वो भी मेरे चैनल में है. एट द सेम टाइम इन द चैनल यू विल ऑल्सो फाइंड रिकॉर्डेड वीडियोज ऑफ सब्जेक्ट टॉपिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट टॉपिक्स, यू विल फाइंड दैट. सो आई एम गोइंग टू अपलोड मोर एंड मोर इन टू दैट. प्लस यू विल ऑल्सो हैव लाइव सेशन देयर. Very soon you will be finding reel shorts on various important current news on this subject will be there in my YouTube channel. So I hope that this really helps you all. So I wish you that you remain in touch, and all of you can participate in my next live sessions. All right. So if there is no question, nothing is there in the new session. So thank you everyone. Wish you a good day. Thank you. Take care. Bye bye. Thank you.